What's good, everybody? Welcome to Madeeh Podcast. And we have on the show once again Taimur Rizwan tuning in from Qatar. How are you doing, Taimur? Assalamu alaikum. Walaikum assalam, bhai. I'm fine, alhamdulillah. Nice to be back. It's good to have you, man, on the show once again. So, Thank the you. topic of today's discussion is going to be the how you moved from Pakistan to Qatar to pursue your studies, and then you Hmm. finish your studies there, and then you started your job, and you're staying in Qatar these days. So, tell us about your experience. How is studying abroad and staying and working in abroad is better as compared to Pakistan? Is it better or not? What are the opportunities? Is it better to work here? What's the comparison? Hmm. Uh, Over to you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bhai, जैसे कि मदी ने बताया, my name is Muhammad Taimur. Um, we actually were schoolmates in the 8th, 9th and 10th grade in O levels. ये 10 साल पुरानी बात है तकरीबन, alhamdulillah. Yes. So मैं लाहौर में रहता था. I was in Pakistan, and then after my A levels, I moved abroad. Um, And moving abroad was always a dream of mine. So I always thought, I'm going to just, there's some pull, some magnetic force that, the abroad had on me. कि यार एक university life होगी, and you're going to do something on your own, एक hostel life होगी, because मैं family के साथ ही रहा था सारी उम्र. Um, when I went to my A levels, I had no idea what university even is. हम सुनते हैं हमारे बड़े भाई होते थे यार वो यूनिवर्सिटी पढ़ गए हैं, बट यूनिवर्सिटी वाज दिस मिस्टीरियस बॉक्स जिसको हमने कभी खोल के देखा नहीं था, राइट? Right. एंड ड्यूरिंग माई ए लेवल्स 2 साल होते हैं, उसमें इतनी भाग दौड़ होती है. यू हैव टू कलेक्ट सर्टिफिकेट्स फॉर पार्टिसिपेशन, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, डू स्पोर्ट्स, यू पढ़ाई करनी होती है, दोस्तों के साथ शुगर लगाना होता है. एंड देन when you look up and you look at the clock, it's time to go to university. um, so that's what happened to me. Alhamdulillah, I was always managed to be a good student by the grace of Allah. I had good grades, so uske hisab se I got admitted into LUMS, Lahore University of Management Sciences. I actually studied there for 1 semester, by the way. And I was studying electrical engineering. This is quite a few years back, like 8 years back. This was I in studied, 2012, I guess. I yes, remember. Uh, 2012. So मैं लम्स में गया. I studied for one semester. And then uske baad, the result was fine, but I was like, yaar, maza nahi aa raha. Not There's content. something, yeah, I want a different experience. It's not that the experience was bad. Lums ka experience बहुत अच्छा था. It was amazing. But I wanted something different. I wanted thoda sa na change. So what I did was, as any sane, rational being would do, I dropped out. I Really? dropped out of university. I didn't tell anyone. Like मेरे घर वालों को भी नहीं पता था. I secretly started taking SAT classes. एंड Wow. या मैं रात को मोटरसाइकिल पे घूमता था लाहौर के शहर में, एंड ताकि पूछे कोई ना कि किधर गया हुआ बच्चा. ठीक है, मैं पढ़ता था एसएटी के लिए, एंड आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ लम्स. आई डोंट एडवाइज एनीवन टू डू दैट. डोंट डू दैट, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मिस्टेक्स व्हेन आई लुक बैक, that there's a rational way to go about it, right? There's a better way to go about it. So don't do what I did. But alhamdulillah, I managed to apply, and I told everyone when I got admitted to different. I got admitted to one of my dream universities, and then you always have these dream universities, and then the colleges that are fine, and then the colleges you don't want to go to. So I got into one dream university, alhamdulillah, the University of Pennsylvania for electrical engineering, mechanical actually, yeah. Wow. So that was my dream college. Like, it wasn't Harvard, it wasn't MIT. I just wanted to go to UPenn. The campus was beautiful. History was amazing. But then suddenly I got admitted to this place called Carnegie Mellon University in Qatar. Now, I've never heard of that name. I'm sure आप में से कई लोगों को नाम नहीं पता होगा. कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं सुना. What's कार्नेगी मेलन? जिसको बताता था कहता था क्या वाटरमेलन, तरबूज, Yes. खरबूज. नहीं, एक्चुअली कहते थे. Melon. That's the first thing that comes
your mind. Yeah, Melon. yeah, melon, right? But then I looked it up. It was ranked 24th in the world, like global Okay. rankings across all majors, 24th in the world, and it was number one in computer science in the world, and number one in my major, which was information systems. उसमें भी number one थी. Okay. And so this is, I don't think even Madi knows this, by the way. लेकिन मेरा दो दफा एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में, द कतर कैंपस में. एक हुआ था मेरे लम्स जाने से बिल्कुल पहले. I अच्छा. got the admission letter and I got an amazing scholarship to go there. And you know what happened? I talked to some people. I asked them, यार देखो कतर में एक यूनिवर्सिटी है. I have a scholarship. I can just go. कतर लम्स छोड़ के कतर जाओगे? मजा नहीं आया, राइट? एंड एवरीवेयर आई Yes. टर्न किसी को नहीं पता था, राइट? सारे कहते लम्स में तेरा एडमिशन हुआ हुआ और तू कतर. सो आई सेड नो टू देम. आई सेड नो Oh, टू दिस really? यूनिवर्सिटी. Oh my God, that's यस, crazy. आई डिड. एक सेमेस्टर के बाद आई अप्लाइड अगेन टू द सेम यूनिवर्सिटी. एंड मैं सोच रहा था कि उस दूसरे एंड पे बंदा यूं बैठा होगा. आ गया वापस, आ गया. You're बट back. yeah, you're back. They didn't give me a scholarship the second time, which Oh, I was really? sad. Yeah, I emailed them. I was like, भाई scholarship? मैं कहा कि बेटा एक ही दफा देते हैं. इतना फ्री नहीं कराया. बार बार Uh, नहीं. हाँ, because there are only four scholarships वो देते हैं, तो उनमें से एक मुझे मिली थी. But alhamdulillah, I was able to get it later on. तो okay, so I get this admission letter to Qatar. I go to Qatar. कुछ नहीं पता कैसी जगह है. मैं मिडिल ईस्ट में नहीं रहा. आई नो काफ़ी पाकिस्तानी अपने भाई होते हैं जो कि मिडिल ईस्ट में बड़े हुए होते हैं. दुबई, कोई भाई होता है दुबई में कुछ, बट मेरा कोई रिलेशन नहीं था, राइट? सो आई जस्ट गूगल सम स्टफ अप. ठीक है कि भाई कतर है कैसा, व्हाट इज इट? एंड आई फाउंड आउट कि कतर actually it's like Dubai but 5 years behind in terms of the modern stuff. So it's very close to Dubai, um, both in geographically as well as socially and culturally. Is quite near to Dubai. Now, it's modern. It has so there's a place called in Qatar called Education City. So it's a city, artificial of course. It's not really a city, but it's an area, an enclosure, a compound जिसको हम society कहते हैं पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ universities हैं and university related stuff है. मेरी university भी education city के अंदर थी. And as God willed, I was to spend the next few years living in Education City and living in Qatar for most of my time. On the way to Qatar, so I share this because it's interesting. On the way to Qatar, I heard something. So I was in PIA. There was a guy sitting next to me, and he asked me, "Is it your first time in the Middle East?" Like, yeah. Like, okay. एक बात याद रखना. मैंने कहा क्या? अपनी ईगो पीछे छोड़ के जाओ. वहां पे ईगो की कोई जगह नहीं होगी. अच्छा. So this is the first insight he gave me on the culture, right? अच्छा, वैसे तो ईगो छोड़ना बहुत अच्छी बात है. There's a hadith which says that जो इंसान की एक राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर आकड़ हो, जिसको हम आकड़ या प्राइड बोलते हैं, ईगो, he cannot enter Jannah. So it's a good thing, right? So okay, I go to Qatar and everything is amazing. So किसी वजह से अभी तक इधर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी साल हो गए. But everything is like super modern. The country is the richest country in the world, according to GDP per capita. So it's a small Okay. population, that's why. So it's a small population, but they have a lot of money. What that means is they're not corrupt. They use the money for on the people. तो उन्होंने एजुकेशन सिटी बनाई, like a lot of facilities जो आप सोच भी नहीं सकेंगे. हम जहाँ रहते थे, हमारी जो housing थी, I'm not joking, like they were ranked in the world's best dorms because उनकी 7-star hotel वाली amenities हमें मिली हुई थी. 7-star hotels वाली. You wouldn't even Wow. imagine क्या क्या चीजें थी. Sliding doors, automatic turning on lights, 55-inch LCDs in the rooms, 3D TVs दिए हुए थे हमें. What like, crazy stuff. Um, and one of the most amazing parts about the university was like class में हम जाते थे ना, so भाई इतनी कमाल projectors थे कि let's say the teacher had a piece of paper, they would hold it under this projector and they could just zoom in and show us the piece of paper on the screen. So हम बैठे बैठे
नॉट ओनली लाइक पावर पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, बट लाइक ये पीस ऑफ पेपर को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखते थे, वो डिजिटल मैग्नीफाइंग ग्लास उसको स्क्रीन पे ले आता था, स्टफ लाइक दिस, लाइक क्रेजी स्टफ। अच्छा। एक क्लास में भाई सिर्फ 10 बच्चे 15 बच्चे होते थे। यू कैन इमेजिन कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना कमाल था। तो मैं लम्स में था ना जब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने फिजिक्स 101 ली थी, तकरीबन 250 बच्चा बैठा था क्लास में। एंड आप मुझे बताओ, टीचर को आपका नाम भी नहीं याद होगा साल बाद तक, राइट? तो कतर की अच्छी बात ये थी, कैंपस वो स्मॉल एंड अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो मैं बहुत अटेंशन मिलती थी, मतलब एंड आवर प्रोफेसर्स वुड से कि यार यू वुड नेवर imagine this, the professors would tell us कि भाई you would never imagine this level of attention on the main campus। जो मेन कैंपस इनका है ना वो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के अंदर है, यूएस में। तो वहाँ पे वो कहते हैं 400 बच्चा होता है क्लास में, तो बड़े फायदे मिले यार। देन कतर की एक, जो जिस वजह से मैं गया था, आई गॉट अ फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप फ्रॉम कतर फाउंडेशन। कतर फाउंडेशन, वो याद है बार्सिलोना की शर्ट्स पे लिखा होता था एक जमाने में, पुरानी किट्स हाँ थी। हाँ 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 हाँ, यस, वही, द स्पॉन्सर, द मेन यस, स्पॉन्सर। वो हमें भी स्पॉन्सर करता है। सो आई एम ऑन द स्पॉन्सरशिप ऑफ कतर फाउंडेशन। ऑलराइट, दे माशाल्लाह। पेड मी मनी टू कम एंड स्टडी फॉर फ्री विदाउट इंटरेस्ट, लाइक कोई हराम काम नहीं है इसमें, सूद नहीं है कोई इसमें। कैन यू इमेजिन दैट? And that was the scholarship that you got, that यस, you came to Qatar and they pay you, and you don't have to pay any tuition fee. yeah, so you don't pay anything and then they take care of you without interest. So student loans का आज 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है यूएस के अंदर, 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, एंड सो मच इंटरेस्ट आउट देयर। कतर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट्स इंटरेस्ट फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस टू वर्क इट ऑफ, ओके? एक तो है कि आप अपनी सैलरी में से देते रहो, राइट? व्हेन यू गेट अ सैलरी। The second is you can just work. So let's say you work for 6 years. 6 years. You can pay it off. So माफ कर देते हैं वो. Like if you work Like for you have six to, years in Qatar, they just forgive it. oh, so you have to pay it from your salary, the scholarship they No, provide not you. if you're working. Not if you're working in like some special companies. No, and there are a lot of them. Like many of my friends, they take, like what they do is they just work for a certain number of years and they don't have to pay anything from their salary. But if you leave Okay. Qatar, if you go somewhere else, you pay from your salary. But they're very understanding. Hey, bhai, this was in a मतलब time is too short. लेकिन this was in a No, just nutshell my experience. take us through the journey. You already take us through the journey, but tell us, how was the experience, and in comparison to Pakistan, how do you find it, and Hmm. what are the benefits, and tell us Yeah. everything about that. Okay. So we're diving into it, huh? Okay. So it's a Muslim country. Pakistan is a Muslim country, but Pakistan is much more liberal than Qatar. Okay. यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोशली एक्सेप्टेबल है हिजाब, एज इन इट्स नॉट लाइक कोई आपको आके डांटेगा नहीं इफ़ यू डोंट, बट फॉर एग्जांपल हिजाब इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे हर जगह हर कोने में एक मस्जिद या मुसल्ला, मुसल्ला इज़ अ प्रेयर रूम, स्मॉल प्रेयर रूम, and Okay. they're like publicly open for people, like in every mall, every store you go to, it's impossible for them to not have a small prayer room, for example. So उस तरह से ना यार, I really love the place because यूएस वगैरह जाके a lot of my friends tell me यार पता नहीं हम ये खाएं, ये हराम है, ये हलाल है, इसमें कोई Exactly. जेलेटिन तो नहीं है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत है, ठीक है। So like for 7 or 8 months a year it's extremely hot, and I'm talking like 50 degrees, ठीक है। Really? 50, yeah, 50-55 degrees, but फायदा ये है कि एसी भी बहुत ठंडा करते हैं। So I will tell Is you, electricity cheap over there? it's almost free, like it's, if you're a Oh, Qatari okay. it's free, but yes, तकरीबन मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप हर वक्त अपना एसी चलाए रखो ना, हर वक्त सारी लाइट्स भी ऑन रखो, एक महीने का आपको तकरीबन 10,000 रुपए से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। Really? कैन यू इमेजिन? That is हर वक्त सारे extremely एसी चला cheap. के रखो। That is यप, peanuts. यप। पेट्रोल बहुत सस्ता है भाई यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मॉडर्न मॉल्स का कल्चर है बिकॉज अच्छा, सेफ्टी सबसे बड़ा यार, सेफ्टी जो है ना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। पाकिस्तान में मैं लाहौर में बड़ा हूँ, जो आप लोगों में से कराची में से हैं, और आप लोगों ने और मुश्किल वक्त भी देखे हैं, अब तो बहुत बेहतर है।
बट गन पॉइंट का सीन होता था, ऐसे सेफ्टी के बड़े इश्यूज होते थे। कतर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पहली दफ़ा किसी मॉल गया था कतर में, तो मैं बेसमेंट की पार्किंग में गया, तो मैंने देखा अक्सर गाड़ियाँ ऑन थी और लेकिन बंदा कोई नहीं बैठा हुआ अंदर। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, मैंने कहा अरे गाड़ियाँ ऑन क्यों हैं? कहता ताकि वो जल्दी से ऊपर तक गए हैं और गाड़ी ताकि ठंडी रहे, एसी चलता रहे उसका, वो दुकान से कुछ ले आएंगे। अच्छा मैंने अच्छा, कहा चोरी नहीं होती, मैंने कहा लॉक नहीं करनी होती? कहता है यहाँ पे चोरियां नहीं होती। एंड अच्छा। कतर में क्राइम रेट इज वर्चुअली जीरो, वाह। वर्चुअली जीरो। आई वुड टेल यू, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आई वुड वर्क इन द आईटी डिपार्टमेंट। हर बच्चे को बाय द वे मैकबुक प्रोज दी थी। ईच मैकबुक प्रो तकरीबन 5 लाख रुपए की एक है। हर बच्चे को एक मिली थी फ्री में, टू कीप फॉर एवर। रियली? यस। वाओ। बच्चे अनबिलीवेबल। बच्चे सीढ़ियों पे छोड़ के गए होते थे। एक बच्ची थी, उसने सीढ़ियों पे छोड़ गई और 3 दिन बाद, वीकेंड के बाद आई, और उधर ही पड़ी हुई थी। ओ माय गॉड। सो कतर दैट की इज कुछ ये बातें अनबिलीवेबल हैं। ब्रो। खैर। अच्छा, तो यू योरसेल्फ आपने बाहर से स्टडी किया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो स्टूडेंट्स अभी अपना ए लेवल्स या एफएससी कंप्लीट कर रहे हैं, वो बाहर अब्रॉड जाएं स्टडीज करने या पाकिस्तान में स्टडी करें, बाहर वो जॉब करें पाकिस्तान में करें? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार my take is it's very simple. It's that, so I believe that a student should be allowed to do what they want to do. अक्सर ना पेरेंट्स का बहुत इसमें इन्फ्लुएंस आ जाता है कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई ये करना है तुमने, वो करना है। बट व्हाट हैपेंस इज यार, पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी नहीं जीनी, राइट? एंड पेरेंट्स से प्यार मोहब्बत भी बढ़ी है, तो आई मिस देम अ लॉट, राइट? बीइंग हियर, आई ट्राई टू गो टू पाकिस्तान व्हेनेवर आई कैन, बट देयर आर सम डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में यार लम्स के मेरे ग्रेजुएट्स थे, मेरे दोस्त, 70,000 80,000 स्टार्टिंग सैलरी थी, राइट? आई एम नॉट समवन हु बिलीव्स के सैलरी इज द 100% व्हाट यू एम फॉर, पर आई बिलीव के आपको अपनी सैनिटी के लिए ना थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यू हैव टू, लाइक इफ यू वांट ग्रेटर थिंग्स, यस। then you have to move. And this is not to say कि पाकिस्तान में आप पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं करोगे. I have friends who went to LUMS, then straight to MIT, and then they're Oh working in really? Pakistan, 10 lakh salary starting, right? So I know people who, if you want to do it, you can do it from anywhere. That's what I'm saying. But if you want to experience a different lifestyle, different culture, meet different kinds of people, learn different languages, पाकिस्तान में यार बहुत बहुत पंजाबी उर्दू मैंने बोल ली है, ठीक है। आई फेल्ट Hmm. वो चेंज अगर आपको चाहिए, देन यू शुड आई थिंक गो अब्रॉड। यस, आई मीन try for a Muslim country, because if you go to a non-Muslim country, I would not recommend it. I spent 1 semester in the US on the main campus. Like जहाँ मैं जाता था लोग यूं देखते थे मुझे। Oh really? लाइक या मेरे मेरे रूममेट ने मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछे थे। he asked me weird questions like why do you, like he looked at me and he said, okay, I'm going to be very honest with you. I was like, yeah, what? And this is the guy like I barely know, and he said, why do you do these things that are happening in the world right now? Like, you know Oh what I my mean, right? God. That's the first thing. Like people have a very bad impression. um, I'm not saying About कि यार Muslims. लोग, I'm not saying कि लोग तुम्हें तंग करेंगे, but you're going to feel a difference. And the way I see it is, why do you want to go to some place where you're not respected? So that's why Treated as a second class citizen. हाँ ना यार, देखो मतलब तुम्हारी जहाँ पे इज्जत नहीं है तुम ना जाओ ना वहाँ पे। बिल्कुल। मतलब हाँ, कुछ लोग होते हैं मुंह नीचे करके काम से काम रख के जाते हैं, 4 साल यूएस से डिग्री करते हैं, हार्वर्ड एमआईटी से आ जाते हैं। इफ यू कैन डू दैट, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल, एंड सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन। Great to know about your story, man. That's I'm sure लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इंशाल्लाह, आई होप। It must be very risky for you कि तुम जब लम्स तुमने छोड़ा, लम्स पे तुमने साइन ऑफ कर दिया और फिर you decided कि नहीं यार, I want to study abroad. This is not the place for me. या That यार must be तुम, very risky decision for you. ऑफ Like कोर्स your whole life was at stake. ऑफ कोर्स तुम ये सोचो, मैंने लम्स छोड़ दिया, राइट? एंड देन लेट्स से मेरा बाहर भी एडमिशन ना होता, मैं क्या करता? मैं तंदूर तंदूर पे अगर वैकेंसीज होती Hmm. तो शायद मैं तंदूर पे रोटियां लगा लेता।
I'm kidding, but maybe Lums would not have me again, right? So don't do what I did. I mean, this is a classic example, and in a future video, we're going to discuss some mistakes that people make during these, high school, college years. Inshallah, we'll talk more about that as well. Chalo, it's great to have you on the show, Taimur. Inshallah, see you soon again in another podcast. So let's say goodbye and Allah Hafiz. Allah Hafiz.